Good morning, class. This is your revision class for predictive analytics and big data. The course is basically designed for enabling the MBA students to decide which technology or which tool will help in analyzing and transforming the data for meeting out the day-to-day decision making process. In this course, the learning outcomes are to understand big data analytics, to develop skills to use predictive analytics tools, to apply certain big data analytics in improving the decision making process, and to solve real world business problems. The syllabus consists of 4 units. First unit is about types of data, data cleaning and missing and handling missing data and outliers. Second unit is about data analytics, its life cycle, and few machine learning algorithms. Third unit is about predictive analytics and text analytics, while the fourth unit is about what are the technology solutions and how we can manage them. So let's start with unit number 1. These are the readings. The first one is your SLM. You can download it from the SOL website, and these are the other references that are mentioned in the syllabus. We have widely followed the book number 1 and book number 4, right? Book number 4 for modeling techniques and book number 1 for the different data sciences techniques. So let's start. The course, as per the title, is Predictive Analytics and Big Data. When I talk about data, we are dealing with millions of GBs of data every day. Data in the form of messages on WhatsApp, in the form of post on the Instagram, in the form of audio and video streams on Netflix or any video platform, in the form of calls, right? Um, Done through any online platform like Skype, Google Meet, or Outlook, Teams. Above all, there are billions of emails that are being sent and received every day, right? Then we are collecting data, or the data is being collected when we do online transactions. So let's start first what type of data it is and what is their importance. Any information, any fact that has been collected over small span of time is called as data. And that data, if it can be comprehended by human brain, that is collected over 1 or 2 years, is called as small data. And big data is that contains greater variety, which is increasing in volumes and uh, is dealing with not with a small span but with a huge uh, span of time, right? So that is big data. So this is the main difference between data, small data, as well as big data. Small data is in low volumes, it has batch velocities, and it is a structured form. While big data is in very huge volumes, it has real time velocities. Every second the data is changing, every second the data is being updated, and it consists of multi-structured varieties. This is another difference. I give an example of small data. Small data is your result, right? Which is being updated in batches, like odd semester result, even semester result, or course wise result. It goes with a batch. Whereas real time velocities is banking data, which is being updated every second. Every second, thousands of transactions are being done. Every second, online transactions are being done. So that is a real time velocity. It is being changing every second.
This is a tabular form of difference between small data and big data. You can read it. Uh, Small data can be comprehended by human brain. Big data, which requires uh, large algorithms and large computation machines. Small data, it arises from human to human interaction, whereas big data, it arises from human to computer interaction. Small data is accessible while big data is very complex. In small data, is accumulation is slow, while in big data, accumulation is very fast. Small data is controlled, whereas big data is rigorous and exhaustive. It takes time for small data to get updated and it is valid for a longer time. Whereas big data is being updated every second and it can be outdated. It can be of no importance, or it is previous data in a matter of hours or days. Above all, next we have the three different types. Data can be structured if it is adhering to a predetermined format in columns and rows. As I told you, small data or structured data is like your result. Your result is in a predetermined format and and it is stored in the form of columns and rows. Next is semi-structured data, which does not conform to the traditional structure, right? And it is stored in relational database. For example, the server logs. How many users have logged in? What is their IP address? And it is stored. It is not stored in the form of columns and rows. Rather, they are stored in uh, a simple text file. ठीक है, आप कोई भी logs देखेंगे, कहीं के भी logs देखेंगे, एरर लॉग्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या लॉग्स फाइल है, दे आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फॉर्म, राइट? नेक्स्ट इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा which is formless and chaotic. All the social media posts, ठीक है, it can have text, it can have image, it can have audio, it can have video. The structure is not fixed. Emails, social media post, right? So these are unstructured format and which can be stored in document, audio, video, or image format. You can see from the snapshot that the structured data is in the tabular form, rows and columns. Semi-structured, again, a part is structured while a part is not structured, and the middle one is unstructured. There is no format of it storing it. Next comes the types of data with which we will be dealing is qualitative and quantitative data. Qualitative is not having any numerical value. It is either nominal or ordinal. Whereas quantitative is having a certain numerical value associated with it, which could be discrete or continuous. Nominal data like colors, letters, uh, types of hair, symbols, words, gender. Ordinal data is basically a ranking, your grades in the result. Okay. Next is time of the day, morning, noon, night. There is a ranking, but yes, there is no numerical value associated with it. Next is discrete or the interval ratio. Discrete or the interval is the numerical or quantitative data like 30 degrees, like temperature, pH, IQ, marks. Okay. Continuous is like again the continuous ratio, distance traveled, time interval, age, range. So these are the different types of data that we will be dealing with. This is a snapshot of different categories of data and what are the levels or scales of their measurement. I'm giving you 2 minutes so that you can
glance over this slide uh, and read out the different examples of qualitative and quantitative data. Ma'am, ma'am, can you Please go ahead. please, Hanji ma'am, can you please repeat the examples of structured, semi-structured, and unstructured data? Okay. स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल हो गया आपका न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, रिजल्ट, एनीथिंग विच इज इन क्रोनोलॉजिकल, राइट, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड इज सर्वर लॉग्स, हैश ट्वीट्स, वेब पेजेस. कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का आप देखोगे एक स्ट्रक्चर होगा, बट यू कैन नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर इन ऑल द वेबसाइट्स. ठीक है. वाई इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड? एक वेबसाइट है, उसके वेब पेजेस हैं, देयर इज सम स्ट्रक्चर इन इट एंड there is some format for that particular web page, but you cannot say that this is a fixed format. ठीक है, किसी वेब पेज पे यू विल फाइंड ओनली द टेक्स्ट, किसी वेब पेज पे यू विल फाइंड. अगर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट बोलूं तो जो डिपार्टमेंटल वेब पेज होगा उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम होंगे. एचओडी का पेज जो होगा उसमें एचओडी की फोटोग्राफ होगी और उसका कुछ मैसेज होगा. ठीक है. इसी तरह से जो फैकल्टी डायरेक्टरी होगी उस सी एचओडी वेब पेज में सिर्फ एक ही एचओडी का नाम होगा. ठीक है. वेयर एज इन फैकल्टी डायरेक्टरी पे वेब पेज में उसमें नंबर ऑफ फोटोज होंगी. जितनी फैकल्टी होगी हर फैकल्टी की एक फोटोग्राफ होगी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उसका नाम, डेजिग्नेशन, प्लस उसका एक ब्रीफ प्रोफाइल का एक हाइपर लिंक भी होगा. ठीक है. नाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ सर्टेन वे कि everyone is following a different this thing, but it is unstructured because there is no fixed format. सिमिलरली आप अगर वेब पेज को देखेंगे, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पेज को देखेंगे तो वहां पे रिजल्ट के हाइपर लिंक्स होंगे. ठीक है. डेट शीट के हाइपर लिंक्स होंगे. So the semi-structured is we have structured data organized in unstructured way, which is not fixed. Server logs, right. Unstructured जो एक completely unstructured होता है वो बिल्कुल ही completely formless और chaotic होगा. Audio, video, ऑडियो डेटा आप यू जस्ट थिंक अबाउट दी सॉन्ग्स. ठीक है. आपके पास बहुत सारे ऑडियो डेटा है, बहुत सारे ऑडियो सॉन्ग्स है. नन ऑफ देम इज स्ट्रक्चर्ड, किसी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. Every audio format, every audio file is having a different structure. कहीं पे waves किसी form में होंगी, audio waves are in different form, which depends on the genre or the sound, then voice, then the lyrics, they all are different. So what I say that it is a completely unstructured form. Social media posts, they are highly unstructured. ठीक है. So these are the different types of examples. Is it Okay, clear thank you, to you, ma'am. Payal? Yes, Okay. ma'am. Thank you. So we were on this particular slide. You all can go through it.
Okay. So next, coming to the next, this is again a sample of structured and unstructured data. You can see different examples here, the same type of examples, right? Next, different types of data based on its nature, format, and attributes. We can have numerical data which can be quantified and can be measured. Then we have categorical data, which is grouped into categories like different types of coffee, different types of tea. This is basically qualitative. We cannot convert it. It is not qualitative means they are not having any numerical value associated with it. But yes, we can convert this categorical data or the qualitative data into numeric form. We can always convert it, but when we collect it or when we have this type of data, it is not in the numeric form. Next is text data, different types of words, sentences, paragraphs, emails, comments, blogs, newspaper clips. So these are textual data. Next is time series data, which changes or which can be arranged in the form of a chronological time. Spatial data related to the space, related to the Google Maps, travel location history, GIS, etc. Binary data, which has only two values, either 0 or 1. Fan is either on or off, yes or no, student is absent or present. Right, so this is binary form of data. Next is image data, which is stored in pixels. The eighth type of data is audio data, which represents sound waves. And where it is basically used in voice to text typing, recommending music, speech recognition. Next is video data, which is like CCTV data and surveillance data, videos regarding movies, short videos, YouTube, right? So these are all video data. The next type is sensor data, temperature sensors, GPS devices, accelerometers, which are there on our vehicles, right? They are what? They are sensing the speed, they are sensing the distance covered, they are sensing the uh, right. So these are sensor data, and a combination of all these types of data, we call it as big data. It is characterized by three V's: volume, velocity, and variety. And sometimes we add the fourth V also, which is veracity, right? So we can say big data is about a mixture of a combination, not mixture, it's a combination of different types of data, which is very huge in its volume. Volume means it is not in megabytes or gigabytes, it is in terabytes. Okay? And it contains different forms of data that I discussed, a combination of every type, and it gets changed every second. Velocity means it is a streaming data, it gets every second changed. हर time उसका change हो रहा है, update हो रहा है. And veracity means integrity. How whether the data is uh, can be reliable or not, right? This is again a snapshot how we represent a big data. And on the right hand side, you can see an image from where it has been collected: organizational and institutional data from the airport and travel, data from the weather forecast, electronic health records, hospital and patient data, industry, स्मार्ट होम्स. ठीक है, स्मार्ट होम्स का डेटा.
technology, connection, currency exchange, images. So all varieties of data that is in huge volume, changing every second or every more day or in a very short span of time is termed as big data. This is again a snapshot. I'm skipping it. Now, where this big data is being used, you can see Amazon. ठीक है, Amazon पे different categories है, आप देखिए products की listing है. अगर मैं सिर्फ Amazon e-commerce website की बात करती हूँ, उस product की listing में images है, ऑडियो एंड वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन है या फीडबैक है या रिव्यू है. फीडबैक और रिव्यू टेक्स्ट की फॉर्म में भी है, ठीक है, प्लस उसमें पेमेंट एसोसिएटेड है. राइट. व्हाट एल्स अदर कंपनीज, वॉलमार्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, उबर. उबर में आप देखिए सेंसर डेटा एसोसिएटेड है. It is tracking the location and the GPS sensors are inbuilt into it. Mm. So these are the few questions. What is the characteristics of unstructured data? It is structured data is stored in the relational database or in a form of uh, tables and columns, rows and columns. Unstructured data is basically in a textual documents, right? They do not have any structure associated with it. Next, coming to the data analysis and data analytics. Analysis and data analytics. These are two different fields. Data analysis consists of cleaning, transforming, and modeling of data, right? It is only analyzing the existing data. We are not using it to find anything new. We are just analyzing it. We are cleaning it before analyzing. We are first cleaning it. We are transforming it and getting this analysis, right? Like average, what is the median, what is the standard deviation. We are not getting any new information or using it to get new information. Whereas when I talk about data analytics, it helps us in finding trends, right? It helps to find the hidden opportunities. It helps to find
the what next course of action could be there, predict action, and to make decision. So these are the two difference between data analysis and data analytics. So एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहा है, में क्या हो रहा है आपका डेटा एनालिस्ट में, डेटा एनालिस्ट इज यूजिंग अ स्प्रेडशीट और एक्सेल शीट, ठीक है. सो फॉर क्रिएटिंग सर्टेन डैशबोर्ड और सर्टेन चार्ट्स, बाई चार्ट, histograms और pie chart, ठीक है. Whereas the one which is finding the report and forecasting something for a new decision or using it to make a new decision is analytics. Okay. So we have two types: descriptive, wherein we are describing the data using different statistics, and predictive, we are using the data to predict a future trend, what will happen next. So let us start with an example. If I ask you to predict what next, you can easily predict that it is a range, there is a trend, that these numbers are increasing by 2. So the next one would be 12. ठीक है. So this is prediction. अब इसके बाद 1 2 4 6 8 10 के बाद I have predicted 12 4 16 and 18. अब इसी का ही अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स निकालूं तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 2 4 6 8 एंड 10. जो ब्लू नंबर्स है उनका एवरेज, ठीक है, इसका मीन, मीडियन, मोड. So this is descriptive, but I am using this blue data, blue numbers to predict the next black number. So this is prediction. What would be the next coordinates on a line? आप देखिए, you will find out a pattern here. So you can see that these question marks could be 2 2, ठीक है, and 6 6. These type of coordinates will be there. Similarly, what would be the, I have this forecasting data, I have this weather data. So I can easily predict what would be the time and temperature on this particular date. ठीक है, looking at the past data, 7th of July 94, 7th 8th, ठीक है, 95 2010, फॉर द लास्ट 30 40 ईयर 7 जुलाई को 11 बजे के टाइम के आसपास क्या टेम्परेचर था, आई कैन इजीली प्रिडिक्ट. दिस इज हाउ द फोरकास्टिंग इंडस्ट्री डूइंग. दे प्रिडिक्ट, बट they predict using the data also, and they predict using the sensors also. ठीक है, different geography, different weather conditions as well as sensors also. ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल से 7 जुलाई को अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है तो आज भी 25 डिग्री होगा. नो, दे यूज दी सेंसर्स ऑल्सो कि इस टाइम पे अब टेम्परेचर क्या होगा, राइट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस. बिजनेसेस में किस तरह का डेटा यूज होता है? ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है, बैंकिंग का डेटा है. कस्टमर डेटा, कस्टमर की प्रोफाइल्स का डेटा है.
कस्टमर के डेटा में आपका आ गया एज, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन। लोकेशन इसलिए हो गया कि आप किस जगह पे रह रहे हो, व्हाट आर योर नीड्स। द नेक्स्ट इज सेल्स डेटा, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, सप्लाई चेन, एम्प्लॉय डेटा, ऑपरेशनल डेटा, मार्केट रिसर्च, competitor, social media, and web analytics. This is just a sample which is used commonly in businesses. And what is their importance now? अब इस डेटा को कलेक्ट करके मुझे क्या मिलेगा? I will use it to get certain decisions. I will use to have a customer insights. कि what are the customers liking, what they are liking, what is their need. Then I can recommend them using personalization. This is what all e-commerce websites are doing. They recommend you certain products which you have already bought or searched. It helps in understanding operational efficiency, forecasting and planning, finding out the market insights, risk management, then customer retention, business intelligence reporting, measuring performance, ठीक है, and for the continuous improvement. So why now that times question comes, why you should study it? First of all, big data we are collecting it. And the second one, to improve the customer relations. I have given you an example of Amazon e-commerce website, how they how they access the addresses and payments mode, how they access the search histories and use them in advertising, to analyze the customer behavior, to perform a marketing strategy. देन नेक्स्ट नेटफ्लिक्स की व्हाट आर देयर व्यूइंग हैबिट्स, उस तरह की वीडियोस को रेकमेंड करना, और अगर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर्स के पास भेजना, सो दैट उस टाइप की, जिस तरह की का कंटेंट व्यूअर्स को चाहिए उस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास भेजना, ठीक है। प्राइस प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। We are using predictive analytics in the entertainment and hospitality industry, to in the manufacturing industries, to minimize the malfunctioning, to minimize the risk. We are using it in the healthcare industries. So predictive analytics is basically what will happen in the future.
So predictive analytics is a study to know what will happen in future, right? But we are not predicting the future. We are not deciding the future. We are just trying to use historical data with mathematical models and getting certain predictions or insights, right? It is not कि हमने मतलब हमारे पास पुराना हिस्टोरिकल डेटा है तो हम उससे न्यू न्यू फ्यूचर प्रोडिक्ट कर रहे हैं. इट इज लाइक हमारे पास पुराना हिस्टोरिकल डेटा है और उसमें हम कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग लगा रहे हैं. वी आर यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथम्स and finding out a new pattern or trends and deciding and making certain decisions. So the use of data, statistical algorithms, machine learning to identify the likelihood of future outcome. See the term, to identify the likelihood, the possibility of future outcome based on the historical data is predictive analytics. The goal is to go beyond knowing, right, what has happened to providing what will be the best in future. So let's have a short break of 5 minutes and then we'll start with the next lesson.
Okay, so coming back, this topic is about the data warehouse, its foundation and concepts. So, what is data warehouse? So, data warehouse is a central storage facility to, to store, collate, and organize data from different parts of an organization. See, the data is being stored at different places. Right now, the different places stores से जो data collect हो रहा है, it is stored on a central facility called as warehouse, where it is collated and organized. This data is efficient for data utilization and analysis and helps in uh, decision making, analysis, and reporting. The data stored in a data warehouse is optimized for querying and reporting. Moreover, it has the user access or the role based accessibility so that the data which is to be accessed by uh, right, so the it basically grants users access to valuable historical and contemporary data. Now, when I talk about its definition, the data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant, and non volatile collection of data, which helps in management's decision making process. Now, what we mean by subject oriented? Subject oriented is means that this particular data warehouse is organized around major subjects. For example, customer, product, sales. It is focused on modeling and analysis of data.
right? Not on the daily operations. Subject oriented means it is about a particular topic, but it is not including any daily operations or transactions. It provides a simple and concise view which helps in decision making process. Integrated means that the data that has been collected from different resources are clean are first cleaned and integrated into a single data warehouse, right? For example, अगर मेरे पास कहीं से होटल्स की प्राइस है, राइट, सम फ्रॉम समवेयर इंडिया में है, इंडिया में करेंसी इज INR. Next is in some another country it is in USD, in some another country it is in GBP, right, pounds. So when I am integrating them, I am cleaning the data or using the currency conversion rates, right, so that this is in uniform and in consistent, which is in uniform as well as consistent. The third feature of data warehouse is time variant. It is significantly longer than the operational systems, right? For example, 5 to 10 years. The next one is non-volatile. It is a physically separate store which is non-volatile in nature. It does not require any recovery or concurrency control mechanisms. So the major operations is first, the data is initialized and loaded, then it is made accessible and it is being periodically updated. It is not transactional or the operational data, it requires periodic update. ठीक है, एक तरह से हमारे पास ऑपरेशनल डेटा है जो पूरे साल भर का स्टोर हो गया, साल भर का कलेक्ट हो गया, अब मैं उसको एक डेटा वेयर हाउस में शिफ्ट कर रही हूँ, एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर रही हूँ. सो इट मीन्स आई एम अपडेटिंग इट आफ्टर अ ईयर, राइट? So next is the characteristics of data warehouse. It requires integration. The data is being collected from different sources, spreadsheets, different DBMS tools. It is being integrated into one single centralized warehouse. It has a predefined tables and it is consistent. It contains historical data, which is a long-term trend analysis, and it is optimized for querying. It supports complex queries. It supports data transformation. The data transformation is about extraction, transformation, and loading of the data. And it is guided by data security and governance laws. Right? The important part is it has to follow the different security protocols, different rules that are applicable from country to country, region to region, with respect to the data. Scalability, a data warehouse needs to be scaled. I can add any of the new data, I can add new columns, or I can add any of this based on the newer requirements, right? So these are the different characteristics of a data warehouse.
So different data warehouses, these are certain examples of data warehouses. Amazon is having Amazon DynamoDB, then Microsoft Azure's, Google's का BigQuery है, ठीक है. Then Microsoft का Azure है, Google का BigQuery, Amazon is having different data warehouses, MariaDB. So these are different data warehouses where you can store the data. This is again a snapshot like Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft Dynamic is for the enterprise systems. IRI and DNB data warehouse is for the syndicated and market. Google Analytics and Hadoop for the big and unstructured data, right? And specialized like Gap Intelligence, OSAS, AccuWeather, these are again different data warehouses available. Now, next comes the data warehousing process, how it is being loaded. So, first is data from the internal databases is extracted. It is then transformed through data cleaning, data validation, and formatting. And then it is loaded into using two different techniques. One is the batch processing or real time streaming, and then it is used for query and analysis. So these are the four different processes in the data warehouse. First one is extraction, second transformation, third loading, and fourth is query and analysis. Different types of data warehouse: enterprise data warehouse, departmental data warehouse, and operational data store. Next, we can divide the data warehouse architecture into different tiers. A single tier where all components are residing on the same server, which is suitable for the small scale data warehouses. And however, it cannot be extended to large businesses because everything is on a single tier. Everything is on a single tier. The second is the two tier, wherein data storage and data querying is separated. There is one server for data storage, and then there is another server used for data query. It is better for scalability and complexity. And the third, the which is being used uh, heavily, is the three-tier architecture where all the three things are separated into three different servers or three different layers. Extraction is right, ETL, storage, and querying, these three things are done in different three layers or three different servers. This helps data storage, data management, and data presentation into different tiers. The different data warehouse models are relational data warehouse model, wherein the data is organized in tables and rows. It uses SQL, and it is these examples are star schema and snowflake schema. Next is multidimensional, wherein the data is represented as matrix like structures with dimensions as attributes and facts as the measures. The example is OLAP, online analytical transaction processing. And the third one is dimensional data warehouse, wherein there are three dimensions: a time, product, and locations, and facts to create snowflake or star schema. Okay, ma'am. Next is data vault, columnar.
in memory, and NoSQL. NoSQL is used for the unstructured data, wherein where the data is not stored in rows and columns. So we use the NoSQL data warehouse. The models which is being used is data lake for the structured as well as unstructured, and the hybrid जहाँ पे हम different types of data warehouse को use कर रहे हैं. Next is the components of a data warehouse. The first component is fact table, which stores measurements, metrics, and the facts. It is at the center of the schema, and we avoid duplicating it. A row is basically a measurement, and measurement is a row. आप देखिए यहाँ पे एक फैक्ट टेबल दी हुई है जहां पे हमने स्टोर किया है की, प्रोडक्ट की, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, एंड दी सेल्स अमाउंट, ये हमने यहाँ पे स्टोर किया है. इट मींस दीज आर द डिफरेंट मेजरमेंट्स, दीज आर द फैक्ट्स, these are the values associated, and it has to be stored in such a way that we avoid duplicating it, right? The next component is dimension table, which is a set of data to any quantifiable event, right? Best attributes are textual and discrete. जनरली डायमेंशन टेबल में आप डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हो, टेक्सचुअल डेटा ले रहे हो, जिसमें आपके पास 3-4 टाइप्स की हो गई, जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 10 to 15 कैरेक्टर्स, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसमें आपका हो गया कैटेगरी नेम. यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने एक डायमेंशन टेबल बताई है जहां पे मैं एक प्रोडक्ट की है, ठीक है, आई हैव मेंशन्ड हियर दी प्रोडक्ट की. इन दिस फैक्ट टेबल में यहाँ पे प्रोडक्ट की है, लेकिन इस प्रोडक्ट की के बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन डायमेंशन टेबल में होगा, ठीक है. इस दिस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका नंबर, ब्रांड, कैटेगरी, उसका साइज, एवरी डिटेल्स आर हियर. इट इज जस्ट लाइक दिस इज अ फैक्ट, ठीक है. इस फैक्ट टेबल में मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर दिया, ठीक है, विच इज अ की. उस पर्टिकुलर रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, उसका कोर्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द डायमेंशन टेबल. So the two things, fact table and dimension table. So this is a star schema. आप देखिए बीच में on at the center there is a fact table. जो fact table होगी वो हमेशा center में होगी, और इस fact table के साथ connected dimension tables होंगे. फैक्ट टेबल में हमने कीज स्टोर करी हैं या आईडीज स्टोर करी हैं, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग की डिटेल्स डायमेंशन टेबल में, राइट. फैक्ट टेबल में हमारे पास फॉरेन की स्टोर हो रही है, ठीक है, दिस इज द आइटम की, और इस आइटम की यहाँ डायमेंशन टेबल में आके प्राइमरी की बन गई है, प्राइमरी की, राइट. सो उस आइटम की के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो आइटम के डायमेंशन में आ गई. इसी तरह से ब्रांच आईडी की जो रिलेटेड डिटेल्स है वो हमारी ब्रांच टेबल में गई है, इट इज इन द ब्रांच डायमेंशन टेबल. Same thing with the location ID, then the time ID, right? So this is a star schema जिसके सेंटर में है फैक्ट टेबल, और each fact table is associated with dimension table. You can have a look at this. I'm giving you a minute.
Okay, coming to the next. This is another example. Fact table is in the center and the dimension tables at around it. Next is snowflake. Now snowflake में एक dimension table is associated with other dimension table. You can see center में fact table है और fact table is connected or associated with different dimension table, and this particular dimension table, right, is associated with other dimension tables. Galaxy schema, we have टू डिफरेंट फैक्ट टेबल्स. हमारे पास सेंटर में दो अलग अलग फैक्ट टेबल्स हैं या दो से ज्यादा है, एंड दे ऑल आर एसोसिएटेड विद डायमेंशन टेबल. वन डायमेंशन टेबल कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर फैक्ट टेबल. ठीक है, सी दिस डायमेंशन टेबल ऑफ ब्रांच इज इट इज एसोसिएटेड विद टू फैक्ट टेबल्स विद द ब्रांच आईडी, राइट. While making a report, we can easily drag and drop the attributes of a fact table. This is how a data warehouse work. कोई भी data warehouse है उसमें हमारे पास drag and drop features should be available. Now, what are the different benefits of a particular data warehouse? Improved decision making, enhanced data quality, historical analysis, reduced data redundancy, and centralized data. Next is data marts. Data marts are a subset of data warehouse that provides information to a particular department. The characteristics of data marts are that it is focused data, it has focused data, it is user centric, simplified structure with reduced complexity and improved performance. So this is a snapshot how a data warehouse and data marts are connected. From different sources, data is stored in a data warehouse, and a data warehouse has a subsets called data marts. Now let us see one example case study. This is a case study of a retail store wherein we have to identify what are the different fact tables and what could be the different dimension tables. Let's go through this case study.
happening here? The first step is to select the business processes. The business processes here are the dimensions with the most impact. So in this case study, the management wants to better understand the customer purchases, and the business process is what we are going to model is the point of sales, retail sales. So let us see what are the product is selling and what are its promotional contents. Next, we will identify the grain, right? The level of data. So the atomic data, that is the most detailed information collected. So what are the dimensions here? Date, आप देखिए यहाँ से date कहाँ से आई? So this is the 100 grocery stores. तो एक हमारा grocery store हो गया, एक हमारा state हो गया, उसके बाद departments हो गए, departments में आपके different types हो गए, फिर उसके बाद आपका हो गया how they are being identified. They are being identified the universal product codes. ठीक है? So these are the different uh, dimensional models. मैम ऐसा केस स्टडी आएगा ये डायमेंशन मॉडल का? नहीं, ऐसी केस स्टडी एग्जाम में नहीं आती है क्योंकि काफी इलेबोरेटेड होती है, और इसलिए ये हम लोग सिर्फ एज अ मीन्स ऑफ एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। और अब मैम उसके बाद हमने, हाँ, लास्ट में आप इम्पोर्टेंट बता देते, आपने लास्ट क्लास में बोला था कि इम्पोर्टेंट बता दोगे लास्ट खत्म होने के बाद मतलब। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द फैक्ट्स। ठीक है, फिर हम इसके फैक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. And next is data quality. Now, when I am collecting the data, data is having certain data quality. ठीक है? Now, data quality, accuracy, data में क्या होना चाहिए? Accuracy होनी चाहिए. Completeness, data has to be complete. Data has to be consistent and its timeliness. And it has to be relevant. उसके बाद हम बात करते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा की. ना मिसिंग डेटा आर ऑफ थ्री टाइप्स: मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, missing at random, and missing not at random. We have three different techniques. One is imputation techniques, wherein we estimate the missing values. Second is the deletion technique, we delete it. And the third one is advanced imputation. Missing data, for example, this is a data that has been collected. यहाँ पे कुछ लोगों ने response नहीं किया या कुछ लोगों ने कुछ data छोड़ दिया, ठीक है? We call it as missing data. अब मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम मींस जिसकी हमें नहीं मालूम है कि कौन सा डेटा किस टाइम पे मिस था या कौन सा देयर, इट इज कंप्लीटली एट रैंडम, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट? मिसिंग एट रैंडम जहां पे कुछ वैल्यूज रिलेटेड है और कुछ अनरिलेटेड वैल्यूज है, वी कैन आइडेंटिफाई इट. नेक्स्ट इज मिसिंग नॉट एट रैंडम, जहां पे है कि ठीक है, द पर्सन हु डू नॉट use fountain pen, they will not give the survey. तो एक तरह से वो random नहीं है, right? The missingness is related to the value that is missing is called as not at random. Now the mean imputation, this type of question may come कि आपके पास मिसिंग हैंडलिंग डेटा जो है, आपका जो डेटा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा, लाइक MCAR, MAR एंड MNAR. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि मिसिंग डेटा है, आप उसको, ये डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, इस तरह से डेटा मिस हो सकता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है. उसके बाद आप इसको कैसे रिप्लेस कर रहे हो, आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो व्हाट विल विद दैट, आप उसको किस चीज से रिप्लेस कर रहे हो. ठीक है, यू आर मिसिंग इट विद द मीन, यहाँ पे जनरली हम लोग एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं. यहाँ पे भी हमने, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने विद द रेलिवेंट ऑफ दैट ग्रुप. आप ये देखिए कि एक वेरिएबल है जिसमें जो हमने आप यू कैन सी दैट अप्रोक्सीमेटली अबव 9, 9 वाली रेंज में ये हमने इसका जेंडर फिल करना था, तो वी हैव filled it with that particular subgroup. We can replace the values uh,
मिसिंग वैल्यूज यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर वैल्यूज। यहाँ पे जो ये वेरिएबल 1 है, दिस इज द एवरेज ऑफ वेरिएबल 2 एंड 3। ये रो वाइज एवरेज फिल किया हुआ, इट इज नॉट दिस वे। ठीक है, आप इसको कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हो और आप इसको रो वाइज भी फिल कर सकते हो, इट डिपेंड्स हाउ वी द डेटा इज रिलेटेड। रिग्रेशन इम्प्यूटेशन यूजिंग अ रिग्रेशन लाइन, वी आर स्किपिंग इट। नेक्स्ट इज, कई बार हम लास्ट ऑब्जर्वेशन को ही उसके आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, सो वी कैन फिल द मिसिंग वैल्यू विद दिस ऑल्सो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। कई बार हम बेस्ट केस से मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और कई बार हम वर्स्ट केस से। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट ओके। नेक्स्ट इज अनदर वे इज डिलीशन। ठीक है, लिस्ट वाइज डिलीशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरी की पूरी रो को डिलीट कर दिया। जिस भी डेटा में, जिस रो में डेटा मिसिंग है, हमने उस रो को डिलीट कर दिया, राइट। पेयर वाइज में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पेयर को हम डिलीट कर रहे हैं, वी आर नॉट डिलीटिंग दी ऑल कंप्लीट। वेरिएबल डिलीशन में क्या हो रहा है, अगर किसी कॉलम में मिसिंग डेटा है तो हमने वो पूरा का पूरा वेरिएबल ही डिलीट कर दिया। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि उस वेरिएबल में इतना डेटा मिसिंग होता है दैट इट इज नॉट अ पार्ट, इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन आवर एनालिसिस, सो वी जनरली डिलीट इट। सो लिस्ट वाइज में आप रो डिलीट कर रहे हो, यू आर डिलीटिंग द रो, एंड पेयर वाइज में यू आर डिलीटिंग द कॉलम। नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? डेटा क्लीनिंग हम क्यों करते हैं? व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन मिसस्पेल्ड वर्ड्स, देयर आर सर्टेन स्पेसेस, अनवांटेड प्रीफिक्सेस। ठीक है, और कई बार डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सो वी परफॉर्म दी डेटा क्लीनिंग। एक्सेल में दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, सो वी आर स्किपिंग इट। नाउ द डिफरेंट बेसिक्स ऑफ डेटा क्लीनिंग। हम लोग डेटा क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं? वी स्पेल चेक। ठीक है, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली की स्पेलिंग कहीं कहीं गलत होगी तो हम उसको यूनिफॉर्म कर देंगे। वी रिमूव द डुप्लीकेट रोज, वी चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट। जैसे स्टूडेंट्स अपना जब एडमिशन फॉर्म भरते हैं, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऑल कैप्स में नेम फिल करते हैं, समटाइम्स किसी का ऑल स्मॉल होता है, कहीं पे कुछ छोटा है, कहीं पे कुछ केस डिफरेंट है, सो वी यूनिफॉर्माइज द केस। जब हम मार्कशीट निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स का नाम हम उसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, एंड देन वी रिमूव द स्पेसेस ऑल्सो। नंबर से रिलेटेड हम फिक्सिंग नंबर्स एंड इट साइंस। देन डेट्स, डेट्स का सबसे बड़ा इशू होता है फॉर्मेटिंग। कहीं पे डी डी एम एम वाई वाई है, डेट की फॉर्मेट्स इतनी ज्यादा वेरिएबल है, इतनी ज्यादा है कि वी हैव टू यूनिफॉर्म द डेट फॉर्मेट फ्रॉम द डेटा। ठीक है, so this is a practical part, I'm skipping it. The next is outlier. What are outliers? इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। What is an anomaly or outlier detection? Outliers are the set of points which are different from the remainder of the data. ठीक है, कुछ स्कोर्स हो सकते हैं थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, कुछ स्कोर्स थ्रेशोल्ड से बहुत ही कम हो, सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ anomaly. Outliers, the data object which is different from the normal objects, are called as outliers, and they are used in credit card fraud detection, customer segmentation, detecting measurement errors, anomaly detection or outlier detection. They are used in medical analysis and public health. ठीक है, इसमें हम इसको यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटलायर्स होते हैं। ग्लोबल आउटलायर्स जो कि पूरे होल डेटा सेट में एनॉमली है। कॉन्टेक्सचुअल आउटलायर्स, कॉन्टेक्सचुअल आउटलायर्स इज आउटलायर्स जो एक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, एंड द थर्ड वन इज कलेक्टिव आउटलायर्स। You can see at this right hand side
ठीक है, हमारे पास अगर ये एक डेटा सेट है, ठीक है, इस डेटा सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटलायर्स ये बाकी N3 एंड N2 है, ये सारे के सारे आउटलायर्स है। जबकि अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में देयर आर डिफरेंट आउटलायर्स, O1, O2, O3 एंड O4, ठीक है। कलेक्टिव आउटलायर्स N1 की कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर मैं ये एरिया देखूं N1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग N2 एंड N3 आउटलायर्स। सो दीज आर contextual outliers or collective outliers, and global outliers which are point anomaly, जो सबके लिए ही outliers है। So a global outlier which is significantly deviating from rest of the data, contextual which is different from a selected context, and collective which is which are a set of data objects, एक object नहीं है, there is a set of data objects which are different from the whole data set. You can have a look at this particular slide, what are the different types of outliers, ठीक है। तो आप so this with this I finish. Okay, statistical approaches. With this we finish off unit number 1, and let's have a short break of 10 minutes. We'll meet at 12. It's 1 o'clock. So we'll meet at 1:15 after a 15-minute break, and then we'll start with unit number 2. I hope it's okay for all of you.
Welcome back, class, after a short break. So, we have covered unit number 1. Now, we'll finish the unit number 4, which is a shorter unit, and it is about technology analytics, solutions, and meds management. So, we have studied that predictive analytics, it is a branch of analytics which identifies the hidden patterns from the historical data using statistical modeling to predict the future outcomes. Now, the predictive analytics consists of 7 processes: define the problem, collection, data analysis, and developing the model, deciding the model, and then depurate the model. Depurate the model means we need to improve the model based on the feedback and new data. Now, the technology analytics. The key components of technology management are strategic planning. We have to we have to take initiatives with the broader business strategies. Technology acquisition, we have to select and acquire proper technologies which are relevant to the organizational needs, and then implement it and manage the risk. So, these are the 4 important components of technology management: strategic planning, technology acquisition, implementation and integration, and risk management. The next important component is resource allocation. The resources are required to be allocated, both human as well as financial, within in an efficient manner. And another component is performance monitoring and optimization, which requires continuous monitoring of the technology that has been used. The next one is the innovation and research and change management. The different tools which are available are the Python, R, SAS, IBM's SPSS Modeler, Microsoft Azure Machine Learning, K9, Alteryx, H2O, Databricks, and Google AI platform. So these are the certain tools which are available for modeling the data to gain certain future outcomes. Next is, what are the analytics solution? What is the different ones? The first one is data strategic planning and alignment, data acquisition, modeling the development, scalability, interpretability, continuous monitoring, and model maintenance. This is an important part, that whatever technology we have incorporated, it requires continuous modeling and its maintenance. And the next one and the last one is challenges and mitigation strategies. This is a case study. We are skipping this. Or we can briefly, quickly go through it. How the patient outcomes are being predicted using a analytical model, right? So there is a hospital, and where there was a significant increase in the first rate care. Uh, so the critical issue that was being noticed was the high rate of patient readmission. Whatever patients were being treated, they were readmitted again with the same problem, right? So the hospital tried to identify what could be the case. So what they did, they took the data from the patient's electronic health record and analyzed it. And what they did, the decision they made is to give personalized care plans and preventive measures. क्यों उन्होंने क्या किया, एक personalized care plan दिया, preventive measure दिया for the high risk patients. उससे क्या हुआ, patients के readmission rates were significantly reduced. So what they used, they took the patient electronic health record and analyzed it. What they analyzed, they analyzed the medical history, lab results, and hospital stay details. In another case study, optimizing the inventory management,
So they face the complex challenge of stores wherein certain stores, कुछ stores पे कुछ products जो थे they were in excess, they were not being selling out. और कुछ stores पे क्या था, तो वही same products या जो same products थे they were in high demand and they were not available. So what they did, they took the data and identified the location of each product. ठीक है. And then वहां से they searched out the purchasing patterns, they analyzed the models, they identified the patterns, seasonal trends, local events, and weather forecast. And then the company adjusted their stock levels. ठीक है. This has reduced the overstocking as well as the out of stock problem and improved the customer satisfaction. So these are the two case studies. So with this, unit number 4 is finished. Next, moving on to unit number 3.
Okay, the process of predictive analytics, it includes the defining the problem, collecting the data analysis, and then we develop the model, decide the model, deploy the model, and then depurate. Depurate is regularly monitoring and refining it. So, in problem understanding, we first take the requirements of all the stakeholders. What are the utilities available? What are the deliverables required? And what is the business perspective? So, this step clearly defines what is to be predicted. Next, we collect the data, and the data may be raw or may be structured or unstructured. Then we apply different types of data collection methods and data analysis. We perform exploratory data analysis, which includes doing numerical calculations like standard deviation, Z score, mean, median, mode, and we also identify the skewness using the graphical representations. Then we apply the statistical algorithms like machine learning algorithms or deep learning algorithms or any regression algorithms. We may use tools like MATLAB, Python, R, or SPSS modeler. Then we have RapidMiner also, right? And we can apply any of the algorithm to identify the new outcome. The different predictive models could be classification models for classifying, for example, regression, logistic regression, decision trees, and SVM. It could be regression model, it could be clustering model. We have time series models also and neural network models. Next, we have the decision. We need to decide after applying multiple models which one is giving the best uh, results, right? For this, we have uh, confusion matrix, right? This is the confusion matrix, which gives the difference of, which gives the count of positive count that has been detected, false positive, negative, and true negative count. Next, we deploy the model, right? Wherein the evaluated model is integrated and implemented. Then we continuously monitor the model and its performance metrics. We add on new data, we apply another model, and we retrain it with the newly added or the updated data. Now, this predictive analytics, it is being used in marketing as customer segmentation, churn prediction, personalized recommendation, and lead scoring. Again, this is an important question that what are the different steps of predictive analytics? ठीक है, ये एक तरह से important question हो जाता है आपका, जिसमें आप ये पूरा cycle बनाते हो और एक एक method को explain करते हो. उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वेयर इट इज यूज्ड इन मार्केटिंग. मार्केटिंग में कहाँ यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में कहाँ यूज हो रहा है, और ऑपरेशंस एंड फाइनेंस में कैसे यूज हो रहा है. ठीक है, ऑपरेशंस में ये यूज हो रहा है टू डिमांड दी forecasting, to identify the demand, to predict the demand, to for optimizing the supply chain, for maintenance prediction, controlling the quality, planning the workforce, right? So this is used in operations. फाइनेंस में कहाँ यूज हो रहा है टू आइडेंटिफाई द क्रेडिट स्कोरिंग, फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट, टू forecasting the market trends. So these are the certain spaces or certain tasks wherein predictive analytics is used in finance. The next topic is text analytics. इससे कुछ questions आ जाते हैं. Text analysis क्या होता है? What is data जो है हमारे, it is highly ubiquitous and unstructured. So how we can analyze the data? So document is a piece of text. ठीक है. Bag of words is a collection of words which ignores the grammar, order, and sentence structures. टेक्स्ट एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें आपकी डेफिनेशन आ जाती है, कॉर्पस, डॉक्यूमेंट, बैग ऑफ वर्ड्स, और एक क्वेश्चन हो जाता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको कुछ रिव्यूज दिए होंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द बैग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स आपके हो गए द वर्ड्स विच आर नॉट ग्रामेटिकल.
ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह से एक टेबल बनाते हो जिसमें इफ इट एग्जिस्ट आप इसको 0 1 की फॉर्म में लिखते हो। वाई 0 1? 0 मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड 1 मीन्स इट एग्जिस्ट। उसके बाद यू डू दी टोटल। The next is term frequency. Term frequency is numerical statistics. Its formula is frequency of the word. जो एक word है वो एक document में कितनी बारी आया है upon number of terms in the document. ठीक है। This is TF-IDF of each word. हर एक word का हमने TF-IDF find out किया है। अब ये जो night word है ये एक ही बार आया है और total words इसमें 6 है, तो its TF will be 1/6. This is term frequency. You want to take a snapshot, you can take it. Otherwise, it is available in the PowerPoints that I have shared. It is also available in the SLM also. The next is IDF. IDF is हम TF जो term frequency है उसका log निकालेंगे and then we'll add it to 1. The third, fourth metric is TF-IDF, term frequency and IDF. इसमें हम क्या करेंगे? We will multiply this TF, ये जो हमने टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी है, विल टेक दिस टर्म फ्रीक्वेंसी, विल टेक आईडीएफ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एंड विल मल्टीप्लाई इट. Next is n-gram sequence. If there are n-gram sequence is the sequence of n numbers. It could be bigram, जैसे co-operation, ठीक है, जिसमें co and operation they are two different words but they appear together, so it is a bigram. Right. Next is named entity extraction. Named entity is a part which is such as a name. किसी भी डॉक्यूमेंट में या टेक्स्ट में अगर किसी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन है, we called it as named entity. Now this is the confusion matrix. This is one of the important question that could be there. And आपको ये confusion matrix वाला question जरूर आना चाहिए. So you can look it very carefully. ट्रू पॉजिटिव, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, देन ट्रू नेगेटिव. दीज आर द टू कॉलम्स विच आर रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स आवर मॉडल ऑफ प्रिडिक्शन और आवर क्लासिफिकेशन मॉडल इज परफेक्ट. ठीक है, हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद है हमारा फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव. दिस शुड बी मिनिमम. सो इस तरह से आपके पास एक मैट्रिक्स होगा. ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स विच आर एक्चुअली पॉजिटिव, राइट. ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव एग्जाम्पल्स विच आर एक्चुअली नेगेटिव, एंड देयर अपोजिट्स आर फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. So this is the confusion matrix. Remember this confusion matrix. ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ questions आ जाते हैं. को ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए. ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, true negative rate and false negative rate. You want to note this down, you can note it down. I am giving you a minute for this confusion matrix and then I'll stop another 1 minute for the formulas.
Next formulas are accuracy. Accuracy is number of correct predictions and total number of predictions. This is what I told you. ये जो रेड वाले markers हैं, true positive and true negatives, they define the accuracy. So true positive plus true negatives, ठीक है? This is accuracy and total number of predictions. Next is precision. So the other formula is accuracy. After accuracy, precision. Precision is about only true positives. We are not talking about the negative values. Next is recall and sensitivity. Recall is about true positives, but in the denominator, we will be taking the total positives of the data set. ठीक है? Total positives of the data set, जिसमें से कुछ जो accurately detect हुए हैं और जो accurately और जो detect नहीं हुए हैं, that will be in denominator. Recall के बाद आपका एक और फॉर्मूला आता है specificity, which talks about true negatives. Next is F1 score, the most important metrics in classification in machine learning is F1 score, which is the harmonic mean of precision and recall. The formula for F1 score is 2 multiply precision into recall divided by precision plus recall. Please note down these formulas. These are the very important ones. Accuracy, precision, recall, sensitivity, specificity, and F1 score. This is one of the important questions that has been there in the previous years also. You are given a confusion matrix. आपको एक confusion matrix मिलेगी, and then you have to find out what are the TP, true positives, true negatives,
false positives, false negatives, and all the four metrics: accuracy, precision, recall, specificity, and F1 score. These are the simple calculations. Just find out the values, put it in the formula and calculate. मार्क्स आर एलोकेटेड, हर एक चीज के मार्क्स होते हैं. अगर आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है तो उसके मार्क्स हैं. फिर आपको वैल्यूज ठीक से पुट अप करनी है एंड देन द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है. सो इस तरह से अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में आपका क्या हो गया? एक्यूरेसी, जिसमें आपको 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला, 1 mark for putting the values, and 1 mark for the correct result or the calculation. So एक तरह से ये 3 marks, then precision, recall, specificity. तो ये कई बार 12 या 10 marks का ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. So this is one of the important questions. Confusion matrix: true positive, true negative, false positive, false negative, accuracy, precision, recall, specificity, and F1 score. I'm giving you 5 minutes so that you can note this down, this particular solved example. आप इस solved examples को अपनी copy में एक बार लिख लीजिए, लिख के एक बार practice कर लीजिए, so that you are having a hands on at yourself.
I hope you all have done it. With this, we finish off unit number 3. We have covered till now unit number 1, 3, and 4. And now we'll start with unit number 2. Hope it is visible to all of you. This unit number 2 is about data analytics and life cycle. So, data analytics life cycle, what are the different steps we do for data analysis and data exploration? So, let's start with it. So, data analytics, it is the foundation of predictive analytics. Before performing predictive analytics, we must be aware of what are the different steps in data analysis. Data science is about data collection, wherein different sources of data is being generated. Then pre-processing the data to ensure quality and accuracy. Selecting the relevant and important features. Next, interpreting and discovering the hidden patterns. Applying statistical methods. Applying NLP. NLP हम कहाँ यूज करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टेक्सचुअल या ऑडियो डेटा होता है. Then machine learning models. Apart from this, we have to take care about ethical as well as legal aspects of the data collection methods. Then planning, executing, and discovering. This we have already studied that a data scientist, it deals with the different data operations, whereas a data analyst, it deals with cleaning, transforming, and generating the inference from the data. ठीक है, its involvement is limited, whereas its involvement is higher. It handles structured as well as unstructured data. Data scientist handles both unstructured as well as structured, whereas a data analyst, it deals only with the structured data. A data scientist has a knowledge of mathematics, stats, and machine learning algorithm. He or she is proficient in different programming languages and different tools also. डेटा एनालिस्ट क्योंकि उसको स्ट्रक्चर डेटा से ही हैंडल करना है, तो ही हैज बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द सेम कैन बी डन यूजिंग एक्सेल, एसक्यूएल और टैबलो. Now the different steps, the same steps, the steps are similar to the predictive, but with a difference. The difference here is the first step is defining the problem, collecting the data, then data transformation. These are the data analysis steps, right? आप क्या कर रहे हो? डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, देन यू आर परफॉर्मिंग डेटा एक्सप्लोरेशन यूजिंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. डेटा एक्सप्लोरेशन इज EDA process. Then you do the data modeling using different machine learning algorithms. Then you check the performance and evaluation. जैसे अभी हमने confusion metric से find out किया, right? And then the decision making. After the decision making, we continuously monitor it with the new data and retrain it and update it. Next is exploratory data analysis. We were talking about here exploratory data analysis, what it is. So exploratory data analysis, it includes summary statistics, mean, median, mode,
standard deviation, percentiles and quartiles, and data visualization. Data visualizations using scatter plots, histogram, box plot. आप देखोगे जितने भी जहाँ पे भी डेटा होता है आप उसको एक न्यूमेरिकल या टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसकी समरी रिप्रेजेंट करते हो, और उसी को ही आप एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, जिसको हम आजकल डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पाई चार्ट की फॉर्म में या लाइन चार्ट की फॉर्म में या बार चार्ट या हिस्टोग्राम किसी ना किसी तरीके से आपको डेटा दिखाई देता है, राइट, विच इज जनरली वी कॉल इट एज अ डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड पे इसी टाइप का डेटा अवेलेबल होता है। नाउ वी हैव कोरिलेशन एनालिसिस, जहां पे हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट या स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट यूज करते हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल टेबल एनालिसिस में वी हैव फ्रीक्वेंसी टेबल्स, बार प्लॉट्स, एंड मल्टीवेरिएट में वी हैव स्कैटर प्लॉट्स, parallel coordinate plots, and principal component analysis. Next, we do the outlier detection using z-score. We perform distribution fitting, geospatial analysis using heat maps and choropleth maps, time series analysis using time plots, dimensionality reduction using principal component analysis. Right, this we will do it quickly. Ki what is predictive modeling? We have already studied, right? So what are the different foundations? Linear regression, एक आपका है linear regression, logistic regression. इन दोनों के बीच के questions आ जाते हैं कई बार, what is the difference between linear regression, logistic regression, या इसके ऊपर एक short note आ जाता है। ठीक है, next we have decision trees, एंड देन दी मॉडल कंपैरिजन। मॉडल कंपैरिजन में आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, दिस यू विल बी फाइंडिंग आउट। नेक्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या है, वी हैव पॉइंट्स, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंड वी प्लॉट इट यूजिंग अ लाइन। ठीक है, एक लाइन के थ्रू हम उसको प्लॉट करते हैं। वी हैव an equation of line y equals to bx plus c। ठीक है, जहां पे y जो है इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, b naught is an intercept, b1 is the slope, and epsilon is the random error, x is the independent variable, right? This is linear regression। उसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स हो गए। पॉजिटिव, जिसमें x के साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव, जिसमें x के साथ y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड नो कोरिलेशन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन वी कैन स्किप इट बिकॉज नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास इज दिस इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड। देखिए, लीनियर रिग्रेशन में वी हैव अ लाइन, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी हैव अ एस शेप कर्व, राइट, वी हैव एन एस शेप कर्व। This S-shaped curve is called as sigmoid function. We call it as a sigmoid function. ठीक है, in logistic regression we have a S form curve called as sigmoid function. दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपने, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एस शेप कर्व है, और ये सिग्मॉइड फंक्शन इज 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस जेड। दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन। सो दीज आर द two main differences. Linear function, linear regression has a linear function. Logistic regression has a sigmoid function. लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगा, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक एस शेप्ड कर्व होगा, राइट। दिस वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज डिसीजन ट्रीज, जहां पे हमारे पास एक डिसीजन डेफिनेशन है, एक डिसीजन नोड है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, एंड देन अ नेट पाथ। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल डिसीजन ट्री, जहां पे हम, हमारे पास डिसीजन नोड है। द डिसीजन प्रॉब्लम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब उसको, शुड आई स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यस और नो, आई हैव टू डिसीजंस, यस और नो। तो हम, ये हमारे दो नोड्स हो गए। अगर मैं यस करती हूँ तो यस के बाद एक और डिसीजन आ गया, इज इट इम्पोर्टेंट, यस और नो। ठीक है, अगर यस है तो क्या रिस्की है, एंड देन वी फाइंड आउट वेदर वी शुड डू इट और नॉट। This is again an example. So decision tree is basically a supervised machine learning model.
right? Wherein you represent the data so that data scientist has two different decision paths. It has a root node, then splitting criteria, we divide the node into multiple subnodes. Then decision node, leaf nodes. Leaf node represents if it does not require further addition or decisions. Pruning and branches. Pruning is when we start removing the subnodes, and branches the subsection of the decision tree. This is an example. You just go through it. It is self-explanatory. Root node is whether I wish to be with friends or not. ठीक है, अब इसके दो डिसीजन है, yes और no. ये किस पे डिपेंड करेगा? वेदर पे. क्या वेदर विंडी है? yes है तो जाना है कि नहीं जाना. no है अगर विंडी नहीं है तो. cold है, is it cold outside? yes. नहीं है, ठीक है. So this is a decision tree. नेक्स्ट इज एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. इट्स फॉर्मूला इज px probability of x multiplied by log of the probability of x. फिर हम उसका समेशन करेंगे, right? And with a negative sign. See the formula of entropy and information gain. इंफॉर्मेशन गेन में आपके पास दो वेरिएबल्स है. यू हैव टू वेरिएबल्स, वेरिएबल नंबर 1 एंड वेरिएबल नंबर 2. यहाँ पे आपका जो इंफॉर्मेशन गेन है इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स. दोनों वेरिएबल्स की आप एंट्रोपी निकालोगे और उसको उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है. सो इंफॉर्मेशन गेन इज डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी ऑफ अ पेरेंट नोड एंड एंट्रोपी ऑफ अ चाइल्ड नोड. You can go through these formulas. Two formulas are there, entropy as well as information gain. This is associated with uh, decision tree.
Okay. Next is Next is Guinea impurity. Guinea impurity is a measure of how a randomly chosen element would be incorrectly labeled. So its formula is this, where Pj is the probability. Okay. The next is decision tree algorithm. We have two algorithms, CART algorithm and ID3 algorithm. This is an example where we classify data using the ID3 algorithm. Here we have
Here we have four independent variables: outlook, temperature, humidity, and wind. And the dependent variable is whether to play football or not. So this is a table which may be given to you. आप लोगों को इस तरह से एक शॉर्ट टेबल दे दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके पास एक कॉलम, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज होंगी, राइट। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द इम्प्योर द वेरिएबल्स। आपको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? यू विल बी कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी, ठीक है, you will be calculating entropy, information gain, and Gini impurities. These three variables you will be calculating. How? Now see, find the parent node for the decision. Parent node कैसे निकालेंगे हम? We will calculate the entropy for everything. हम यहाँ से पहले एक पहला variable ले लेते हैं, outlook. Let us take the outlook as the first variable. ठीक है, इसमें how many values are there? Sunny, overcast, rain. These are the थ्री वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली, आउटलुक, उसमें हमारे पास तीन है, सनी, ओवरकास्ट एंड रेनी। अब सनी के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड आउट कि यस कितने हैं, ठीक है। गो बैक हियर, नाउ सी, सनी के साथ यस कितनी बार है? यहाँ पे नो है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स इट्स नो। सो हमने यहाँ पे दिस इज 3 टाइम्स, ठीक है, सनी के साथ 3 टाइम्स नो हो गया। एंड सनी के साथ यस कितनी बार है? दिस इज यस, राइट। सो 2 टाइम्स इट्स यस, दिस इज यस। सो टोटल हो गया 5। सिमिलरली ओवरकास्ट के साथ आप चेक करो, यस कितनी बार है, नो कितनी बार है, रेनी एंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में हमारे पास यस है, लेट मी काउंट विद द ग्रीन कलर, this is overcast 1 2 3 and 4. So yes is 4 times and no is 0 times. Similarly with the rainy के साथ yes is 1 2 3, 3 times it's yes and 2 times it's no. So this is our table. This is some typo error here. I am making it 3 and 2 here. So total is 14, right? अब इसके बाद हमको निकालना है एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? आई विल बी कैलकुलेटिंग यस। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है यस वाला और दूसरा है नो वाला।
सो यहाँ पे हमारे पास एक yes है और no है, ठीक है, this is no and this is yes. So what was the formula for entropy? हमारे पास दो वेरिएबल्स है, we have uh, I will be finding out probability and log of it, ठीक है, and then we'll sum it up. कैसे करेंगे हम इसको? Probability of yes multiply log probability of yes, ठीक है. इसके बाद probability of no multiply log of probability of no. So what is it? Yes का आप कैलकुलेट करिए, 2, 4 and 3. It comes out to be 9. No का आप कैलकुलेट करिए, 2, 0, 2. Sorry, this is 3. 3, 0, 2. So this is 5 and total is 14. तो yes वाले में हो गया 9/14 log of 9/14 प्लस no वाले में हो गया 5/14 log of 5/14. And with this, we'll have a minus sign also. ठीक है? If you are provided with log tables, you can calculate these values. If you are not, you can leave it as it is also, because remembering the log values is not possible. The important part is to calculate the entropy and to make this table neatly and accurately. You can note this down. I'm giving you 2 minutes.
Hope you all have done this. Similarly, we will be doing the same operation, same set of calculations on the second variable, that is temperature. Right? And then we will find out the different, see, now this is how we have calculated it. Once the entropy is calculated, then we will find out its entropy entropy with the complete outlook, right? And then we will find out the information gain of all the three variables. This is through the Excel. This is how we are doing it through Excel. Again, the same thing. Next, we will find out the entropy with sunny and temperature. इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है, now you find it out its entropy, right? Then you will select the largest one, and the largest one is the root node. This is the decision tree. आपको जो ये data दिया हुआ है, the data which is given here, right? You can, from here you can build out the decision tree. यहाँ से हमने आउटलुक से हमने तीन वेरिएबल्स लिए, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन. सनी में आपके पास दो डिसीजन है, ह्यूमिडिटी हाई है तो नॉर्मल, हाई है तो नो, नॉर्मल है तो यस. एंड दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड द डिसीजन ट्री. The next one is classification using CART algorithm. CART algorithm में हम Gini use करेंगे. We will use the Gini index. In the same here, in Gini index, the formula for the Gini index was 1 minus. So what was the formula for Gini index? Let's go back. This is the formula. I have to take the probabilities of every variable, sum it up and subtract it from -1. So CART algorithm में हमारे पास 9/14 probability of yes, probability of no. I will add, ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे. So what is it is 9/14 square it plus 5/14 square it. What you will get? 1 minus, you will square it, add it and subtract it. You will get the value as 0.491. Similarly, you can find out Gini for the other two variables, right? So the question would be like, find out the Gini impurity. You can calculate the Gini impurity with like this. This is a resource, YouTube resource, wherein you can see how decision tree can be built up using ID3 and CART algorithm. With this, I finish the complete syllabus of predictive analytics and big data. Right now, we will take up certain questions. Let's have a break of 5 minutes and then we will take up certain questions. By that time, you can, I'm showing you this particular PPT again so that you can note down any calculations if you require. So after a break of 5 minutes, we will come back again and discuss the queries and questions.